Hello everyone, welcome to Nirja Education. You are watching part 4 of class 10 chapter Federalism. Today we are going to discuss on decentralization in India. Now what do you mean by the decentralization? Decentralization means that some power is taken away from the central and the state government and given to the local level of government. मीन्स कुछ पावर्स जो सेंट्रल के पास है और स्टेट के पास है वो पावर्स को कुछ पावर्स है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट को देना, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन सम पावर इज टेकन अवे from the central government and state government and given to the local level government is called decentralization. Till now we have discussed that the federal government have two or more tiers of a government, two or more levels of a government, you can say that. मतलब अभी तक हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, two or more levels of a government होते हैं. We have discussed the two tiers of a government. Till now we have discussed two tiers of a government. But our country India cannot be run only through these tiers. Our country is a very big country, so by only this two level of a government our India cannot run. So why cannot run? Because state in India are as large as independent countries in Europe. अगर हम लोग देखें हमारे कंट्री के जो स्टेट्स हैं, हमारे इंडिया में जो स्टेट्स है वो इतने बड़े स्टेट्स हैं कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. इंडिपेंडेंट कंट्री जो यूरोप में है उतने बड़े बड़े हमारे स्टेट्स हैं. So it is impossible to run our country only by two tiers of a government. Two tiers of a government means central government and state government. So it is quite impossible to run our country India by only these two tier of a government. Because if we see in term of a population, if we compare Uttar Pradesh, then Uttar Pradesh with Russia, then Uttar Pradesh is bigger than Russia in population, in term of a population. So उत्तर प्रदेश में जितनी पॉपुलेशन है वो कहीं ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रशिया. एंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ महाराष्ट्र, our state Maharashtra is about as big as Germany. If we compare Maharashtra with the Germany, then it is the same. अगर हम लोग देखें कि वो कितना बड़ा है, महाराष्ट्र भी उतना बड़ा है, जर्मनी भी उतना बड़ा है. पर व्हाट इज महाराष्ट्र? महाराष्ट्र एक स्टेट है हमारी कंट्री का और जर्मनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. Many of these states were internally very diverse, so we need a power sharing within these states. So हमारे states अगर हम लोग compare करें तो वो independent countries हैं in the Europe. So we need the third level of a government, and that is a local level of a government. Then only we can run our country successfully. Only by two tiers of a government it is impossible to run our country because our states are very big. So here we are going to discuss about the decentralization in India. So decentralization means when some power is taken away from the central and the state government and given to the local level government, it is called decentralization. Now what are the benefits of the decentralization? We have introduced the third level of a government, that is a local level of government. So the basic idea behind the decentralization is that there are a number of problems and issues which are settled at a local level government. Means अगर हम लोग decentralization करेंगे तो बहुत सारी problems जो होती है वो local level में ही solve हो जाएगी, उसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो भी problems है, issues है वो हम local level में ही settle कर देंगे. See, the basic idea behind the decentralization is that there are a large numbers of problems and issues which are best settled at a local level, जो local level में ही settle हो जाएगी. Now people have a better knowledge of problems in their localities. Now local होगा, local level government होगी तो क्या होगा, हमें local levels की जो problems है वो हमें अच्छे से पता होगी and हम लोग को पता भी होगा कि उसको कैसे solve करना है. So local level में ही सारी problem solve हो जाएगी and people even have better knowledge about the local levels problems. They also have a better ideas on where to spend the money and how to manage the thing very efficiently. मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट अगर सेटल होगी तो दे नो वेरी वेल के वेयर दे हैव टू स्पेंड द मनी.
अगर कुछ बजट उनका होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो उन्हें पता होगा कि हमें सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो सबसे पहले वो उसके पीछे पैसे लगाएंगे एंड देन वो कंसर्न करेंगे दूसरी प्रॉब्लम को। मतलब इसका मीनिंग यही है कि उन्हें पता होगा कि हमें कहाँ पे मनी स्पेंड करना है और उनका वर्क इफिशिएंटली होगा। They also have a better ideas on where to spend money and how to manage the things very more efficiently. And local level government is the best way to realize one important principle of a democracy, namely local self government. Now democracy में एक ये third level of a government आ गया है and it is the best way to realize the importance of the principles of a democracy. मतलब principle of democracy हमें अच्छी तरह से पता चलेंगे and namely is local self government. So the need for the decentralization was recognized in our constitution also. सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा बताया है कि हमें थर्ड लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट लाना चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल्स ओनली। प्रॉब्लम्स है वो लोकल लेवल में ही सॉल्व हो जाएगी। Since then, there have been several attempts to decentralize the power to the level of a village and the towns. मतलब विलेज एंड टाउन्स में ही डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। सो देयर इज अ पंचायत इन द विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज आर इन द अर्बन एरियाज, मतलब इन द टाउन्स। हर एक स्टेट्स में विलेजेस में पंचायत होती है एंड सिटीज एंड टाउन्स में क्या होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती है, जो लोकल लेवल में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट दे आर ऑल्सो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो पंचायत है और म्युनिसिपैलिटीज है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। A major steps towards the decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of a democracy more powerful and effective. Now constitution में कुछ changes लाया गया to give the importance to the third tier of a democracy also. थर्ड टीयर ऑफ अ डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस देते हुए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ अ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। सो अ मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। क्या मेजर स्टेप्स लिया उन्होंने? टू मेक मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल टू द थर्ड टीयर ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो थर्ड लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल और मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। सो नाउ इट इज़ कंटिन्यूसली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पहले ये कंपलसरी नहीं था, इलेक्शंस पहले कंपलसरी वहाँ पे होल्ड नहीं किए जाते थे, बट आफ्टर द चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के बाद कंपलसरी कर दिया गया कि लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे रेगुलरली दे आर गोइंग टू होल्ड इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन कंपलसरीली होगा। Seats are reserved in the elected bodies and the executive head of this institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Now कुछ seats जो होगी वो already reserved होगी for whom? For scheduled caste, scheduled tribes and for other backward classes. So उनके लिए already जो seats होगी election में वो reserved रहेगी। Now from that at least 1/3 of all the positions are reserved for women. सारी जितनी भी positions होगी उसमें जो 1/3 होगा, 1/3 जो हो गई वो 1/3 positions होगी वो किसके लिए reserve रहेगी? For women. Now an independent institution called State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and the municipal election. Now इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मतलब हमने जो देखी वो सारी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है। जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो बनाई गई किसके लिए? टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए, वॉज क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट बॉडीज। नाउ रेवेन्यू की तो जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू मीन्स फाइनेंस, जो टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं, तो
उनको स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यूज जो हो गए वो उनको शेयर करने पड़ेगी विद लोकल लेवल गवर्नमेंट। जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होगी उनके साथ उनको अपना पावर्स और कुछ रेवेन्यूज शेयर करना पड़ेगा, बट इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, सपोज अगर एक स्टेट गुजरात सपोज है, अगर गुजरात जितना शेयर कर रहा है, कितना रेवेन्यू दे रहा है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट जो महाराष्ट्र है या कर्नाटका है वो भी सेम ही रेवेन्यू शेयर करेगा। इट वेरीज, पावर्स एंड रेवेन्यू वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दैट हाउ मच दे आर शेयरिंग विद द लोकल लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब उनके पास कितना पॉसिबल होगा उतना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो शेयर करेंगे पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू state. This new system of a government is the largest experiment in a democracy conducted anywhere in the world. There are elected 36 lakh representatives in the panchayat and the municipalities all over the country. The number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for the local government has helped to deepen the democracy in our country. It also increased the women's representative and a voice in our democracy. Means जो ये constitution में जो changes आए हैं for the effective and the powerful local level government, वो बहुत ही ज़्यादा benefit हुआ because around 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया इन द पंचायत एंड इन द म्यूनिसिपैलिटीज, और ये जो नंबर है वो बहुत ही बिगर है। अगर कंपेयर करें तो ये जो एक कंट्री की पॉपुलेशन होगी उससे भी कहीं ज़्यादा ये रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुए, दैट इज 36 लाख। एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने ऐसा स्टेटस बना दिया है जो वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उसको भी इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो इंक्रीज, एंड इवन वुमेन वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी ऑल्सो इंक्रीज्ड। So this is all about the decentralization in India. With this topic we have completed our second chapter of a civics, that is federalism. I hope you understand. Thank you for watching the video.